हाय गाइस, वेलकम टू ओएस हब। केमती अछंती आपण माने भलो अछंती? तो सोशियोलॉजी रो मेंस टेस्ट सीरीज जो चली टेस्ट 1 रो हेई जाईची এবং पेपर 1 रो यूनिट 1 2 3 ता यूनिट नै गुटे देन सेकंड टेस्ट जो गोटे यूनिट रो आपण पाई जिवे केवल थिंकर्स अछि। सो एई तीनटा सिलेबस हला पेपर 1 रो हमें सोशियोलॉजी डिसिप्लिन, scientific study of social phenomena, then techniques of data collection and basically scientific oriented, science oriented topic, fundamental of sociology केमिति हला कोन पई हला काहे कि सोशियोलॉजी जे साइंस कंसीडर करा जीवो तार रिलेशन साइंस ऊपर एवं केमिति ताको स्टडी करिबा तार स्टडी कोन मेथड कोन एनालिसिस करिबा डाटा कलेक्शन वगैरह 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 एंड दीज आर बेसिकली स्टडी एथरो हमर पाखा पाखी 12 टा क्वेश्चन जोटा कि आगु को आमे वन बाय वन मॉडल आंसर देबी मु कहबी एग्जैक्टली एमि देखंतु बट ट्राई करिवे दिस इज सम काइंड ऑफ आइडिया आपण अलगा भी लिखि परिबे मु मो तरफ रु जे पॉसिबल वे रे आपण मन को आइडिया दी मो भले लेखिले आपण को मार्क पाई परिबो आपण से तो ऑब्जेक्टिविटी साइंस ऑब्जेक्टिविटी साइंस in the light of this statement exam is to objective so कथा हला आ गोटे कथा कहि वन बाय वन एवरी डिटेल्स टॉपिक हेतु आपण ऑलरेडी जे एग्जाम दउची जानि थिबो सम काइंड ऑफ नॉलेज थिबो मु एठी फंडामेंटल नॉलेज दवा पई आसीनी काइना के क्वेश्चन सटा ये प्रोसेस मु कहबी कि केमिति लेखिबे कोन कोन एरिया को टच करिवे नॉट अबाउट मु टीच करी पूरा प्रॉपर्ली तो ऑब्जेक्टिविटी ऊपर आपण एठी बेसिकली कहबे कि ऑब्जेक्टिविटी इन सोशल साइंस इज एन इल्यूजन माने बेसिकली आपण जो यूनिट 2 रे टॉपिक अछि प्रॉब्लम्स ऑफ ऑब्जेक्टिविटी वैल्यू न्यूट्रलिटी एंड इशू ऑफ मेजरमेंट सोशल साइंस सो ऑब्जेक्टिविटी ऊपर ही ये टॉपिक ता अछि तो ऑब्जेक्टिविटी जोटा कि वैल्यू न्यूट्रल हो अनबायस्ड हो या डिटेल तार ऑब्जेक्टिविटी रो डेफिनेशन एठी दिया गला तो कथा लकी ऑब्जेक्टिविटी अचीव करियो इन सोशल साइंस रे सी कोचन गोटे इल्यूजन जोटा कि प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल जोटा कि 100% ऑब्जेक्टिव इवन मैक्स वेबर भी सेमती कहिथिले कि भाई पॉसिबल नो तो नेचुरल साइंस स्ट्राइव फॉर ऑब्जेक्टिविटी स्टडी ऑफ सोसाइटी जोथरे ह्यूमन बीइंग को इन्वॉल्व कराओ सेतिरे ऑब्जेक्टिव अचीव करिवा डिफिकल्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रे आमे यूज करि परिवा अचीव करि परिवा सब सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिव रहिबो एंड एवं एठी ऑब्जेक्टिव अचीव करवा हाईली से कथा कहउची कि वेरी डिफिकल्ट टू अचीव अमर्त्य सेन नोट्स दैट ऑब्जेक्टिव ट्रुथ एग्जिस्ट बट आवर एक्सेस टू इट इज लिमिटेड बाय प्रोस्पेक्ट देखो दीज आर द पॉइंट्स आपण मानको पई काम रे आसीबो दीज आर द पॉइंट आपण माने काम रे आसीबो मु आपण एठी कांसेप्ट बुझेबिनी व्हाट इज ऑब्जेक्टिविटी वगैरह वगैरह वैल्यू न्यूट्रलिटी मु एगुडा बुझेबिनी काई ना आपण एठी टेस्ट दउचंदी टेस्ट देकी आपण एक्सपर्ट होबा को जाउचंदी यू हैव नॉलेज बिल्कुल जीरो रे थिले ये टेस्ट देकी किछ लाभ नै सो ऑब्जेक्टिव ट्रुथ एग्जिस्ट बट आवर एक्सेस इट ये के कहले परसेप्शन द नेचर ऑफ सोशल रियलिटी कोन कहीं आम जाने सोसाइटी बहुत सारा वैल्यू अच्छी बिलीफ्स अच्छी मीनिंग्स अच्छी इमोशंस अच्छी एवं बिहेवियर ऑब्जर्वेबल बिहेवियर वेरी डिफिकल्ट मनीष के कौन चेंज हो वेरी डिफिकल्ट सोशल रियलिटी इज कंस्ट्रक्टेड नॉट डिस्कवर्ड फेनोमेना लाइक रिलीजन हो कास्ट हो क्लास हो जेंडर हो पावर रिलेशन आर शेप्ड बाय कल्चरल एंड हिस्टोरिकल context making them hard to study with neutral detachment. For example, studying the caste system or gender inequality, involves the researcher's own moral or ethical position, which influence. चलो नहीं तो मु गोटे एग्जांपल देली कि भाई कास्ट सिस्टम ऊपर स्टडी करजे या जेंडर इनइक्वालिटी ऊपर स्टडी करजे ये रिसर्चर तार गोटे मोराल वैल्यू थी ना सी कौ कास्ट रो अच्छी सी कौ कास्ट को भल पाए खराब पाए
तार एथिकल पोजीशन कौन अच्छी रिगार्डिंग कास्ट जी रिसर्च करू गोटे इंटरप्रिटेशन रिसर्चर वैल्यू बायस ये गोटे थाए मैक्स वेबर कही बास से कही भाई वैल्यू न्यूट्रल कंप्लीट वैल्यू न्यूट्रल इज इम्पोसिबल कंप्लीट वैल्यू न्यूट्रल इज इम्पोसिबल तुमको देख कौन तुम एक्सट्रा शिखुच कि जो थिंकर्स ये अमर्त्य सेन है कथा है ये मैक्स वेबर कथा थिंकर्स को तुम्हें मोर आंसर रे इनक्लूड करवा बहुत जरूरी अदरवाइज सोशियोलॉजी जे जनरल साइंस है ना सोशियोलॉजी जे साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी नॉर्मल सोसाइटी स्टडी वाला जदि तो ही इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू फ्रीडम कथा व्हाट फेरिएट ओके सेटा कथा कहले स्कॉलर शो ट्राई फॉर न्यूट्रलिटी बट रेको तो ये सब सी कहले प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सी कहते सो मेक्स ओवर मोर प्रैक्टिकल researcher social background political orientation and ideology shape their choice topic and interest then similarly example marxist study class conflict a functionalist focus on ये सब गुड़े सोसाइटी ये देखीदे सब्जेक्टिविटी एंड रेस्पोंडेंट कौन ना वन सब्जेक्ट या इंटरप्रिट करे मॉडिफाई करे तार रेस्पॉन्स बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट हो अवेयरनेस हो तार इमोशन नेचुरल साइंस रे सेटा काम करे मोर इमोशंस अवेयरनेस कॉन्टेक्स्ट किछि काम करे जोटा अच्छी जोटा डायरेक्टली रेशनलाइज वे हुए so this makes data collection prone to की सर्वे हम ऑन करप्शन और मोरालिटी से जे पीपुल जी सर्वे करा जाऊथबो जे सोशली डिजायरेबल आंसर दउथो रेदर देन सत्य कथा रिक्वायर से सेटा कथा को देन इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट ए एंगल सब दबो बेसिकली क्वेश्चंस को देखो बेसिकली challenges to achieve objectivity the society so these are the challenges culture of bias ho subjectivity and respondent ho influence of social and political context social research does not occur in vacuum it is often influenced by funding agency political ideology and institution what is studied and how it is studied are often determined by dominant ଯେମିତି colonial anthropology colonial anthropology often reflected Eurocentric perspective justified colonial domination ओके बुझीगला नहीं केमिति रिसर्चर रे डोमिनेशन सोशल मेथडोलॉजी का चैलेंज नेचुरल साइंस रे आम एक्सपेरिमेंटेशन जो हुए सेटा कंट्रोल्ड मैनर रे ओके बट रेयरली सेटा पॉसिबल कहना ह्यूमन बिहेवियर फॉर डायनामिक चेंज होता है समय अनुसार चेंज होता है तो इवन स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स कैरी इंटरप्रिटेटिव एज्यूम्पशन क्राइम रेट स्टैटिस्टिक्स ये रिफ्लेक्ट करे डिफरेंस policing or reporting not actual difference in feminist and critical theory these are सब challenges okay डॉर्थी हो सीमित हो सांड्रा हार्डिंग हो ये क्रिटिसाइज करथिला ऑब्जेक्टिविटी एज मेल सेंट्रिक तो ये गोटे एठी कहले सो दे एडवोकेट फॉर सिचुएशनल सिचुएटेड नॉलेज ये से कथा कहथिले ताले क्रिटिकल थ्योरी जोंडे कि हबरमास सी कहले नॉलेज इज टायर्ड टू एमांसिपेशन नॉट न्यू सो ये कथा कहले कि कौन कौन चैलेंजेस अच्छी तुम देख एंड केमी अचीव करवा गोटे इल्यूजन व्हाइल कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी जोटा कि मैक्स वेबर कहते ऑब्जेक्टिव सोशल साइंस मे नॉट इंडीड इल्यूजन yes this does not render social rather sociologists जो माने and social scientists what aim for reflexivity being aware of their biases and context of the research वेबर कहले एटा वेबर स्टेटमेंट लिखियो ऑब्जेक्टिविटी इज एन आइडियल एमिति आमे सबले चाहूछु कि आइडियल को पाखु बुझिबु ये 100 रु 100 रखिया पाई बट 100 रु 100 रखिया पाई चेष्टा करले सबे रखिबा नॉट रियली अचीव देखले ऑब्जेक्टिविटी इज ए आइडियल आइडियल माने जोंडा कि प्रैक्टिकल नॉट अचीवेबल पर तो परस्यू करा जाए आइडियल टू बी परस्यू नॉट रियलिटी hence the challenges is not to eliminate subjectivity but to acknowledge manage critically reflect upon it the study of society analyze the relevance of sociology analyze the relevance of sociology in the study of human action sociology रो 21st century रे कौन कौन रीजन कौन कौन कॉन्टेक्स्ट चाहे ग्लोबलाइजेशन हो
बहुत बड़ा चेंज होती ग्लोबलाइजेशन सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्म कर वेरियस सोसाइटी हो इकोनॉमी हो कल्चर हो पॉलिटिक्स हो ये सब इन्फ्लुएंस changing the scope of study of transnational social processes, the increased interconnectedness of the. This include examining how global economic, cultural flows, migration pattern, technological advancement impact social. केमती सोशियोलॉजी चेंज होइछि तो अर्जुन अपादुराई से एक्सप्लेन करथिले ग्लोबलाइजेशन थ्रो फ्लो ऑफ 5 स्केप्स जोटा कि स्केप टेक्नोस्केप आइडियोस्केप finance and media scape. That is flow of people, technology, ideas, money, and media. Sociology is interested in study of all these dimensions. So, changing dimension of flow of people between nation, cultural shock होउची, technology गोटे create होउची, digital divide create करूची, nation भितर, finances जो flow होउची, multinational company वगैरह, ये गोटे new middle class create करूची. सोशल मीडिया सोशल कंटेंट ये गोटे क्रिएट करूची कम्पैरिजन एटा डाइवर्सिटी क्रिएट करूची एंड सोसाइटी भितरे सो ये सब एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन स्टार्ट अछि प्रोलिफरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सब गोटे ए करूची पोस्ट ग्लोबलाइजेशन इंडिया कोन न्यू पर्सपेक्टिव जोटा कि न्यू चैलेंजेस जो ग्लोबलाइजेशन हला इको फेमिनिज्म जोटा कि एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन ताकू बढ़िला जोटा faced by females post structuralism. So globalization basically broaden the scope of social for more multidisciplinary and interconnected approach to study complex social process. Sei bhaliya basically more or less globalization upre focus relevance of socialism plus century. Similarly, positivist method and characteristics of positivist method in positivist sociology जोटा कि आमे देखि जोंटे ସେଇଥିରେ ସିଏ କ'ଣ କହୁଛି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ମେଥଡ଼ ଟୁ ଷ୍ଟଡି ସୋସାଇଟି ୟା ଉପରେ ଡେଫିନେସନ୍ ଆମେ ନେଇଥିଲେ ବେସିକାଲି ପଜିଟିଭିଷ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ ଗୋଟେ ରିଲ୍ସ ବନେଇଥିଲେ ସେଇଥିରେ କହିଥିଲେ ଅଗଷ୍ଟ କମ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇମାଇଲ ଡର୍କହାଇମ୍ ଦୁଇ ଜଣ ପଜିଟିଭିଷ୍ଟ ଥିଲେ ଏବଂ ସେଇମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସୋସିଓଲୋଜି ଟର୍ମ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ ଅଗଷ୍ଟ କମ୍ଟ ଏବଂ ସୋସିଓଲୋଜି ଯେ ସାଇନ୍ସ ଭଳିଆ ପ୍ରୁଫ୍ କରିଥିଲେ ଇମାଇଲ ଡର୍କହାଇମ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ କମ୍ଟକୁ ଫାଦର ଅଫ୍ ସୋସିଓଲୋଜି କୁହାଯାଏ ଇମାଇଲ ଡର୍କହାଇମ୍କୁ ଫାଦର ଅଫ୍ ମଡର୍ନ ସୋସିଓଲୋଜି ओके तो ये तार इंट्रोडक्शन रहा पॉजिटिविस्ट कौन ना एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन एंड सेंसरी एक्सपेरिमेंट दे डोंट बिलीव इन इमोशंस वैल्यू सिस्टम ओके दे पॉजिटिव्स बेसिकली कौन जेन्युइन नॉलेज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट वेरिफिकेशन by observation and experiment emphasis on placed on empirical data oriented what can be seen measured and verified but it is value neutrality next over कहले choosing topic value neutral positivity emphasis detachment to ensure on biased result से कहले पूरा डिटाचमेंट हवा दरकार न्यूट्रल हवा दरकार ऑस्कार लुइस मध्य क्रिटिसाइज करथिले कि स्टेरियोटाइप इन हिज कल्चर ऑफ द पॉवर्टी फेस showing how personal bias can influence the research तो विलियम वाइजर भी सेमती कहिथिले या ऊपर क्वांटिफिकेशन एंड यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स डिडक्टिव रीजनिंग पॉजिटिविस्ट रिसर्च कौन कहिथिले एवं डिडक्टिव मॉडल देथिले हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल where hypotheses are derived from theory and tested against the observable data Karl Popper the critical of naive positivism supported the idea of falsifiability and deductive test of causality and universal law rejection of common sense these are मुझे स्ट्रक्चर दे दूँ मुझे डिटेल से तुम पढ़ो नहीं तो ये बेसिकली पॉजिटिविस्ट मेथड कौन तार कैरेक्टरिस्टिक मेथड are the characteristic the French industrial revolution are the twin birth French and industrial revolution twin birth of the sociology yes ମୁଁ ବି या ଉପରେ ତୁମେ describe कर sociology जे देखिबा एमर्ज होबार मेजर रीजन थिला गोटे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कौन देला ना इकोनॉमी बेसिस रे सोसाइटी को चेंज कला इंडस्ट्री करी सोसाइटी को चेंज कला एवं फ्रेंच रिवोल्यूशन कौन ना आइडियोलॉजिकल चेंजेस कला ओके पॉलिटिकल चेंजेस कला ये इकोनॉमिक चेंजेस कला ये पॉलिटिकल चेंजेस
This revolution created the condition and intellectual climate that gave birth to sociology, systematic study of society. Hence, they are called twin birth of sociology. These basically these are that met together. Basically, good political awareness create kala. जोटा कि आइडिया ऑफ इक्वालिटी फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी को क्रिएट कला एंड तुम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कौन ना इकोनॉमिक एंगल को क्रिएट कला इकोनॉमी डेमोक्रेसी तुम इंडस्ट्रियल ग्लोबलाइजेशन को बेसिकली तार सोसाइटी को स्टडी थिंक कला कि भाई नॉर्मल सोसाइटी जो ट्रेडिशनल सोसाइटी को से ब्रेक कला ट्रेडिशनल जो आमर बॉन्डिंग थी ताको ब्रेक कला ब्रेक करके गोटे न्यू एज सोसाइटी क्रिएट कला चेंजेस क्रिएट कला सेटा को बेसिकली तार इम्पैक्ट देखियो फ्रेंच रिवोल्यूशन सोशल थॉट्स हो फ्रेंच रिवोल्यूशन capitalism है डेमोक्रेसी इक्वालिटी capitalism को हटेला monarchy को हटेला traditional authority of monarchy and church emphasize vision rationality and secularism social upheaval है collapse of the old social order political transformation है intellectual revolution है enlightenment thinker like Voltaire Rousseau तुम्हारा Montesquieu ये national and secular idea को ये inspire कले तो साइंटिफिक रीजनिंग ऑफ सोशल प्रॉब्लम को स्टडी करिया पई सोशियोलॉजी को जाय एवं सेटा तापरे अगस्त कम मध्य इन्फ्लुएंशियल रिवोल्यूशन एवं सेटु से टर्म को कॉइन जी ता माने साइंस ऑफ सोसाइटी स्टडी सोशल ऑर्डर एंड प्रोग्रेस तो ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन सेमिति लेट 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी रे ब्रिटेन हैला ये भी मध्य इकोनॉमिक चेंज हैला इकोनॉमिक सीट हैला परे सोशियोलॉजी स्टडी कले भाई क्लास रिलेशन लेबर इनइक्वालिटी पॉवर्टी ये सब आइसला अर्बनाइजेशन माइग्रेशन ये कांसेप्ट ऊपर स्टडी हला तो सोशियोलॉजी एमर्ज एज अंडरस्टूड हाउ सोशल ऑर्डर कुड बी मेंटेन्ड द मॉडर्न सोसाइटी एठु कांसेप्ट ओके सो एमर्ज सोशियोलॉजी साइंटिफिक डिसिप्लिन से न्यू सोशल रियलिटी आसला न्यू क्वेश्चंस अबाउट ऑर्डर चेंज प्रोग्रेस नीड फॉर सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोशल लाइफ ये सब जो रिक्वायरमेंट थिला सो ये माने आसिले कॉम्प्टन मार्क्स डर्कहाइम वेबर हाय तो ये तांकर इन्फ्लुएंस हला ताए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ये सब तुम्हें दीटा जगर इन कंपैरिजन करके दे पारिबो ओके फ्रेंच रिवोल्यूशन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आर द इंडीड द ट्विन बर्थ ऑफ so do remember statement भी मने रखो very important so very important concept they gave the sociology its two central concerns order how society holds together change how society transform okay discuss the interrelationship between sociology and psychology how does social psychology serve as a bridge between two it's also very important also very important so sociology studies human behavior a group or society focusing institutions culture and social structure psychology study individual behavior mental process and personality okay so this dita ka concept अलग अलग concept but दीटा को डिपेंड करे इंडिविजुअल बिहेवियर यदि ठीक हेनी ताले सोसाइटी इम्पैक्ट पकेबो so these are interrelated since individual and society influence each other this is very important point these disciplines are interdependent social psychology bridges this gap by studying how individual behavior is shaped by social context both sociology and psychology study and behavior okay both behavior को study সেই অনুসারে তুমি कंपेयर करिबा दी जन को भीतर रिलेशन कण कॉमन कण बुथ स्टडी ह्यूमन बिहेवियर क्राइम स्टडी करिबो ये क्रिमिनल माइंड स्टडी म्यूचुअल इन्फ्लुएंस सोसाइटी इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस सोसाइटेशन देखिले शेयर्ड कांसेप्ट कॉम्प्लीमेंटरी मेथड जे जा मु पढौनी आउ डिटेल से सिमिलरली डिफरेंस कण सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी सोसाइटी एंड ग्रुप्स बिहेवियर इंडिविजुअल एंड मेंटल तो ये सब में देखि पारिबो साइकोलॉजी सोशल साइकोलॉजी ब्रिज केम तो बेसिकली ये इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड कंबाइनिंग इनसाइड ऑफ बोथ सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी दी जन को कंबाइन करिया कथा कोला okay so how it acts as a bridge think individual and societies study of social situation affect individual behavior conformity hela aggression hela prejudice integrate
Uh, Perspectives. Use a psychological principle, that is perception, learning, to explain sociological phenomena, rules, norms. Importance of social psychology. Explain how society molds personality and how individual maintain and change social norms. ये सब थिला सोशल साइकोलॉजी दिस आर वेरी इजी वन बट तुम्हें को पढ़िया पड़े जी पढ़ी ये ठीक अच्छी न पढ़ी डिफिकल्ट लगे फुल पढ़िया फुल जदि आपण मैंने जाना चाहते पूरा पूरा डिटेल्स पढ़िया आपण मैंने फाउंडेशन बैच जॉइन करी पारंती या मेंस रे मेंटरशिप बैच रे जॉइन करी पारंती मु सेइथरे सोशियोलॉजी ऑप्शनल विषय in sociology research design refer to the overall strategy used to integrate different components of research from data collection to analysis to ensure the study effectively addresses the research problems. Three major research design are exploratory, descriptive, and experimental, each serving different purposes depending on the nature of the social key. So, differentiate between descriptive, exploratory, experimental design and what types of social problem that is. तो देखो ये ता ऊपर डिफरेंस पचार तो जदि आम क्वेश्चन देखा देख तुम दिस this part scientific study of concept of basically theory fact hypothesis research design रे descriptive explanatory experimental and basically या ऊपर यही टॉपिक रु आसी सब तुम सिलेबस बाहर क्वेश्चन आसे ना सिलेबस भितर मेजोरिटी क्वेश्चन तो से अनुसार descriptive explanatory experimental तो या ऊपर तुम मेजर अच्छी डायरेक्ट क्वेश्चन एक्सप्लोरेटरी कौन जोटा कि तार कैरेक्टरिस्टिक एप्लिकेशन इन द सोशल तार एग्जांपल descriptive कौन accurately what focus on what exists rather than why it exists similarly application देख then experimental तार देख ले पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन मु एट तो पढ़ेबी नहीं तुमको खाली गोटे फॉर्मेट दे दूची सो एप्लिकेशन इन देन फाइनली ये तीन टार आम जब पार कंपेयर करदे तुम एग्जाम तुम पढ़ भल मार्क पाइब टेबुल करदे तुम बहुत मार्क पाइब ओके सो कंक्लूजन so each research design serve as a distinct purpose in society मु तुमको डिटेल्स कहूनी कहीं तार रीजन अच्छी रीजन है पिला भाया लगे मुझे कहीं मुझे बुझे पूरा डिटेल्स बुझा पड़ो है ना नहीं तो से अनुसार मुझे गोटे फॉर्मेट दे दूँ तुम देखी पार तुमको पढ़ी पार Auditory, descriptive and expert. तीनटार आमे पूरा एक conclude भी दे देलु. Together they represent the progressive stages of search from exploration to description and finally to distinguishing theory and fact in social. How are two interrelated? एटा विषय कौन सी अछि? Unit 2. Okay, theory and fact. सबले सिलेबस को जेमति आखि आगे रखी थिबो. सिलेबस ही तुमको सब किछि देबो गाइड करिवो. तो फाउंडेशन कोर्स जॉइन करना जरूर जरूर जॉइन करो फाउंडेशन कोर्स देखो थियोरी एंड फैक्ट्स टू रो थियोरी एंड फैक्ट्स आपण सेंस बाहर किसी आसे ना एवं यारी भितर क्वेश्चन हमर एग्जाम रे भी आसीबो एग्जाम रे भी यारी भितर बाहर आसीबो नाही तो बेसिकली तार इंट्रोडक्शन सोशियोलॉजी knowledge develops through systematic interaction between facts, and both are essential component of the scientific inquiry. Facts provide empirical basis, while theory provides interpretation and explanation. And a sound sociological understanding arises when empirical facts are analyzed through theoretical. So, say अनुसार meaning of the facts are example. Meaning of the theory लिखिदेले तार example. So, theory and facts are different. बेसिकली फैक्ट्स माने जानी समझते थियोरी माने कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन ये सोशल विल भी एक्सप्लेन करे इंटरप्रेट करे बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड डाटा कलेक्शन बेस्ड ऑन लॉजिकल रीजनिंग एंड सिंथेसिस डाटा ऑन मैरिज रेट्स जोटे कि एग्जांपल जो देखियो थ्री एक्सप्लेनिंग कॉजेस ऑफ डिक्लाइनिंग मैरिज प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर थ्योरी बिल्डिंग गाइड कलेक्शन एंड इंटरप्रेट सिमिलरली इंटररिलेशनशिप बिटवीन थ्योरी एंड फैक्ट्स म्यूचुअल डिपेंडेंस थ्योरी गाइड ऑब्जर्वेशन फैक्ट टेस्ट थ्योरी क्यूमुलेटिव नॉलेज त्याको मिसे
So then Weber theory of bureaucracy emerged after the emerge of actual pattern of administrative organization. Empirical study ହେଲା family, caste and education refine kara existing theory को ये सब आपण माने एग्जांपल पाइबे. Discuss the uses of limitation of content analysis in the study of mass media and public. It a very direct question. Okay. माने आमे ऑलरेडी क्लासेस रे पढैछु मु ऑलरेडी जो डिस्कशन करिथिली पीवाईक्यू सेइथरे भी मु करैथिली अपन YouTube चैनल ऑलरेडी अछि. कैन स्टडी दिस वन. ओके. सो कंटेंट इज ए सिस्टमैटिक स्टडी. ये हमें देखी चाहिए या ऊपर तो यूजेस ऑफ कंटेंट एनालिसिस लिखिबो मास मीडिया रिप्रेजेंटेशन अंडरस्टैंडिंग पब्लिक ओपिनियन एंड आइडियोलॉजी हो मेजर इन द ट्रेंड ओवर द टाइम बेसिकली यही समय कंटेंट को हमें एनालिसिस करबा टूल फॉर प्रोपेगेंडा एंड पॉलिसी स्टडी सोशियोलॉजिकल थ्योरी बिल्डिंग देन एडवांटेजेस ऑब्जेक्टिव एंड सिंथेटिक नॉन इंस्ट्रूमेंट quantifiable historical use wide applicability. Limitation of content analysis surface level analysis search bias तार limitation कहला जो content level ले then lack of context time consuming labor intensive limited causal these are point गुड़ा जो so application of study of mass media and of public opinion या ऊपर एग्जांपल आम यूज करिकी कहि परिबा. कंक्लूजन आम कंटेंट एनालिसिस रे स्ट्रक्चर दे दूची तुम जे देखिकी लेखियर अछि लेखिदेव बट प्रॉब्लम है कि तुमको निजको टिके डेवलप करिया पड़ो. केस स्टडी इंटेंसिव एंड क्वालिटेटिव मेथड एग्जामिन कर. तो केस स्टडी कौन ताको डिफाइन करिवो आगे केस स्टडी ओके. ओके इन डेप्थ डिटेल एग्जामिनेशन स्केल यूनिट को रिसर्च करिया पई केस स्टडी एन इंडिविजुअल हो या ग्रुप हो इंस्टीट्यूट हो कम्युनिटी हो और इवेंट रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट करे जाए. वाइडली यूज्ड इन सोशियोलॉजी साइकोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी एंड social science to understand the complex social phenomena. So case study both intensive है पारे and qualitative and is accurate काहे कि ना ये in depth rather than breadth गोटे छोटिया particular issue नबो ता ऊपर detailed study करिवो. Case study is an intensive केमिति intensive implies कौन thorough exhaustive and detailed investigation गोटे कि सर्वे रे सेटा हुएनी लार्ज सैंपल तो सर्वे रे छोटिया सैंपल लिया जाए बहुत बड़ सेमती एग्जिट पोल एबे हला बहुत छोट सैंपल जमती बिहार प्राय भोटर 8 कोटी पाखापाखि भोटर 8 कोटी से माने सैंपल नहीं थिबे मुश्किल 14,000 15,000 कि 30,000 एमती सैंपल नहीं कि मैक्सिमम लक्षे पर्यंत सैंपल नहीं लक्षे भी कहीं नहीं नथिबो सैंपल एते छोटिया सैंपल एते लार्ज को प्रेडिक्ट करिया डिफिकल्ट बट ये गोटिए केस नबो सेटा को स्टडी करियो. स्लम कम्युनिटी डेली से पॉवर्टी फैमिली स्ट्रक्चर ये सब टेक्निक ऑफ इंटेंसिव करना पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इन डेप्थ इंटरव्यू आर्काइव आर्किवल रिकॉर्ड्स लाइफ हिस्ट्री. केस स्टडी ऑफ क्वालिटेटिव ये नॉन न्यूमेरिकल डाटा एक्सपीरियंशियल परसेप्शन एटीट्यूड बिहेवियर सोशल इंटरेक्शन क्वालिटेटिव प्राइमरी या से डील करा जाए. स्टडिंग कॉपिंग स्ट्रेटेजी ऑफ फैमिली डीलिंग विथ chronic illness involve narratives and personal experience rather than statistics. Advantage of case study in depth अंडरस्टैंडिंग दउची केस स्टडी ऊपर तार लिमिटेशन ओके तार एप्लीकेशन हमें ऑलरेडी डिस्कस द मेथोडोलॉजिकल इंपोर्टेंस ऑफ स्केलिंग टेक्निक इन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा. ये भी डायरेक्ट क्वेश्चंस मेथोडोलॉजिकल इंपोर्टेंस कौन स्केलिंग टेक्निक यूनिट 3 रे आपनकर such as altitude opinion beliefs attitude opinion beliefs perception preference ये क्वालिटेटिव इन नेचर डाटा थाए रिसर्च रे. स्केलिटेटिव कौन ना सिस्टमैटिक मेथड जे अलाउ करे क्वांटिफाई क्वालिटेटिव डाटा को क्वांटिफाई करियो तार नंबर बाहर करियो डाटा बाहर करियो मेकिंग इट पॉसिबल टू मेजर कंपेयर एंड एनालाइज स्टैटिस्टिक्स. तो ये डेफिनेशन सब वेरी इंपोर्टेंट है कीवर्ड को धरिया जरूरी. कीवर्ड स्केलिंग टेक्निक दे आर सेंट्रल टू सर्वे रिसर्च सोशल साइकोलॉजी and social bridging that gap between subjective experience and objective. स्केलिंग टेक्निक कौन ना न्यूमेरिकल वैल्यू को असाइन करा जाए रैंक दिया जाए क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डाटा करा जाए से कन्वर्ट कौन नॉन न्यूमेरिकल डाटा जने कि एटी ओपिनियन स्टैटिस्टिकल
Likert scale ଅଛି, Thorstone scale ଅଛି, Putnam scale ଅଛି, semantic differential. Methodological importance of scaling, quantification of subjective data, attitude, opinion and perception. Example कौन ना measuring public opinion on government policies using 5-point Likert scale. Decision measurement facilitate statistical analysis. Limitation, enhance reliability and validity used for comparative search. Limitation अच्छी ये oversimplified अच्छी application is social attitude, gender bias, political. Assessing consumer behavior and public opinion. Scaling technique जोटा कि crucial था qualitative subjective data. Then what is sampling? Last है what distinguish between probability non probability sampling. ये क्वेश्चन बारंबार आसी सैम्पलिंग रो जानिचो फंडामेंटल प्रोसेस गोटे सैंपल साइज नबो गोटे सबसेट नबो गोटे सबसेट सिलेक्ट करिवो लार्जर पॉपुलेशन गोटे छोटिया सैंपल नबो जोटा कि सैंपल साइज निया जाए जो सर्वे रे भी यूज करा जाए जे हमर वर्तमान भी यूज करा जाए एग्जिट पोल सैम्पलिंग कोन ना जनरलाइजेशन करिया पे इजी हुए जनरलाइज करे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग basically technique use करा जाए very member of population known non-zero chances of being थिबो types of sampling example देखिबो sampling random sampling systematic sampling stratified sampling and cluster sampling या ऊपर तार example then advantages कोन advantage non probability sampling is basically sampling technique where selection is based on non-random criteria not all member have known chances of okay so types of tar example है conventional sampling judgmental purposive novel sampling and quota and tar advantages and limits difference कौन है ना probability non probability ये random ये non random ये high representation high ये low ये generalization possible ये limited अच्छी bias low high and statistical inference ये ही पर सेठी नहीं and example sample random stratified convenience and purposive सर तुम्हारा सैम्पलिंग थिला ये टेस्ट सीरीज मेंस टेस्ट सीरीज जॉइन करिया चाहिबो टेस्ट अछि वेरी डिस्काउंटेड प्राइस वेरी लो प्राइस एवं मेंस मेंटरशिप जीएस सहित टेस्ट सीरीज जो थरे फाउंडेशन बेसिस सोशियोलॉजी रे जे पूरा बेसिक रु पढिया चाहूची जे फाउंडेशन जॉइन करो जे मेंस ओरिएंटेड पढिया चाहू पढी सारची थरे ता पई मेंटरशिप प्लस टेस्ट सीरीज जॉइन करंतु जल्दी जय जगन्नाथ